बदलने का इरादा है, ना हम किसी को बदलने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस में ऑलरेडी ये निर्णय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 10 न्यायमूर्ति ने दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, तो बदल ही नहीं सकता। बाकी जो 2 पार्ट हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी में, जब इंदिरा जी चुनाव हार गई रायबरेली का, तो उस समय विशेष रूप से उन्होंने अपने खुद के स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान तोड़ा, बाद में जनता पार्टी ने आकर वो कलम रद्द की है। तो संविधान से छेड़छाड़ अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की। पर यहाँ अपप्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। पर अब लोगों को वो मुद्दा साफ हुआ है, लोगों की गलतफहमियां भी दूर हुई है और लोकसभा के चुनाव के विषय अलग थे। इस समय निश्चित रूप से हमें एज है और हमारी अलायंस जीतेगी। सर, वन सेंस दैट वाज देयर आल्सो ड्यूरिंग द लोकसभा पोल्स वाज कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, इसीलिए आपने शिवसेना को तोड़ा, इसीलिए आपने एनसीपी को तोड़ा और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी थी, शरद पवार के लिए सिंपैथी थी। देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र में और बहुत कद्दावर नेता है, पर उनके राजनीति में जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनने सब पार्टियाँ फोड़ी हैं। शिवसेना को भी फोड़ा है, भुजबल वगैरह उस समय उन्होंने बाहर किए, निकाले। उन्होंने राजनीति में ये अक्सर होता है और ये सही है कि गलत, ये बात अलग है, पर पॉलिटिक्स में ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। तो ये कभी ये बातें होती है, कभी जनता में इसका फ़ायदा भी होता है, कभी रिएक्शन भी आती है। तो उस वक्त रिएक्शन था नहीं, अभी इस समय लोकसभा में ओवरऑल जिस प्रकार का अपप्रचार कांग्रेस ने किया और मुसलमानों के मन में भय पैदा किया वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और दलित समाज और आदिवासी समाज में संविधान को लेकर गलतफहमी पैदा की, और आदिवासी को कहा गया कि आपका आरक्षण बंद करने वाले हैं। तो ये जो थोड़ा सा प्रचार जिस प्रकार से हुआ उसके कारण हमें थोड़ी तकलीफ हुई। पर अब चुनाव के बाद ये सिद्ध हो गया कि ना, ऐसा कोई बात है, सब प्रचार झूठा था। तो निश्चित रूप से अब इसमें हमको जनता का विश्वास अच्छी तरीके से मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नो, you're one of those who has worked very closely with बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे का आपके साथ अलायंस ना होना 5 साल पहले, प्रीपोल अलायंस था, उसके बाद सरकार नहीं बनाना, और उसके बाद वो तोड़ करके वो चले गए, मतलब आपने तोड़ दिया दोनों पार्टीज को, और उसके बाद जो बहुत ही बिटर पॉलिटिक्स रहा है दोनों साइड से, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाला साहब ठाकरे जब थे तब प्रमोद जी, गोपीनाथ जी, मैं भी उस समय था, पहली बार हिंदुत्व के विचारों के लिए अलायंस हुई थी। वो कोई केवल सत्ता के लिए गठबंधन नहीं था। बाला साहब का अपना एक स्वभाव था, उनका एक नेतृत्व था, और मैं उन भाग्यवान लोगों में से हूँ कि जिसको बाला साहब का बहुत प्रेम मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से था। वो मुझे गडकरी के बजाय रोडकरी कहते थे, रोड की वजह से। रोड के कारण। और बाला साहब से खुली चर्चा होती थी। परिस्थिति में ऐसा हुआ कि बाद में जो हिंदुत्व के लिए बनी हुई अलायंस अगर नहीं टूटती तो उसमें महाराष्ट्र के मराठी लोगों का हित था, पर दुर्भाग्यवश अलायंस टिक नहीं पाई, विवाद हुए और टूट गई। पर नेचुरल अलायंस जो थी उस समय जो बनी थी वो भाजपा शिवसेना की नेचुरल अलायंस थी, क्योंकि हिंदुत्व का विचार लेकर शिवसेना और भाजपा दोनों भी चलते हैं। तो आज जो जिन पार्टियों के साथ उद्धव ठाकरे जी काम कर रहे हैं वो पार्टी का हिंदुत्व वाली, अभी अबू आजमी भी उनके साथ आ गए, कांग्रेस भी आई, शरद पवार के राष्ट्रवादी को, उनके अपने अलग अलग विचार हैं। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं पॉलिटिक्स का ऑफ कन्विक्शन का विद्यार्थी हूँ और माय कन्विक्शन इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। अब धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हावी हुआ है, और स्वाभाविक रूप से राजनीति में डिटोरेशन होता है तो सब लोगों को लगता है कि मेरा क्या होगा,
हर आदमी एमएलए बनना चाहता है, हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, और इसके कारण जो आइडियोलॉजिकली पॉलिटिक्स था उसमें कमी आई है। इसमें लोकतंत्र का नुकसान हुआ। इसलिए हमको फिर से एक बार विचारों के आधार पर पॉलिटिक्स को मजबूत करना होगा, उसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, और ये कोशिश करती रहनी चाहिए। Sir, one view is that the real Shiv Sena is always the one which has Thackeray at its helm, not a Shinde leading a Shiv Sena. देखो, राजनीति में अनेक सवालों के जवाब चुनाव से मिलते हैं, और अब चुनाव हो रहा है, और चुनाव ये तय कर देता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब टूटी, इंदिरा जी ने अलग पार्टी तैयार की, और निजलिंगप्पा मोरारजी देसाई ने अलग पार्टी तय कर दी, कांग्रेस ओ, और इंदिरा जी की कांग्रेस इंदिरा। परिस्थिति में इंदिरा जी ने प्रूव किया, तो एक कांग्रेस रिलीवेंट रही और एक चली गई। जनता की अदालत में ये सब बातों के फैसले होते हैं, और उससे कुछ पार्टियां ख़त्म हो जाती है और कुछ पार्टी मेन स्ट्रीम में बढ़ती हुई जाती है। तो आज तो कुछ कहना ठीक नहीं है, पर चुनाव के बाद भी उसके ऊपर मूल्यांकन हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट मराठा फैक्टर? इस चुनाव में है कि मुसलमान, महिला और मराठा तय करेंगे कि महाराष्ट्र किधर जाएगी। तो मराठा कितनी बड़ी आपकी सरदर्द बने हुए हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिस्थिति है, माहौल है, वो इस समय सबसे दुख का विषय कि जातिवादी माहौल ने थोड़ा खराब किया है, और बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मैं किसी जात को आरक्षण देने के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जिस भाव में गैस का सिलेंडर मुसलमान को मिलता है, उसी भाव में हिंदू को मिलता है। अब दुर्भाग्य ये कि आरक्षण की अपनी एक मर्यादा भी होती है, पर यह बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पर महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, इनके वैचारिक अधिष्ठान महाराष्ट्र में रहा, और इसलिए जातिवाद मुक्त सुदृढ़ लोकतंत्र, ये महाराष्ट्र ने ये विचार पूरे देश को दिया है। पर इस समय जातीयवाद पर, जाति का उपयोग करके समाज को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और दलितेतर समाज, अल्पसंख्यक समाज में डर पैदा करना, दलितों के मन में जानबूझकर संविधान बदल रहा करके गलत प्रचार करना, आदिवासी कहना तुम्हारा आरक्षण रद्द हो रहा है, और मराठा के भी आरक्षण की कहानी है। तो इन सब बातों से, ये जो बातें, हर व्यक्ति का अधिकार है क्या करना और क्या नहीं करना, पर महाराष्ट्र का जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता था, और आज भी पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका सबका विचार, उनका कार्य, कर्तृत्व, विचार पूरे देश में है। ऐसे स्थिति में जिस महाराष्ट्र ने दिया, वह जाति के आधार पर समाज डिवाइड हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक नेताओं को मिलकर एक बार ये महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज, फुले, अम्बेडकर, शाहू महाराज की दिशा में अगर जाना होगा, तो जातिवाद और सांप्रदायिकता से दूर हटकर विकास के मुद्दों के आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो है, उनका कल्याण कैसे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, और सुखी, समृद्ध, संपन्न महाराष्ट्र कैसे निर्माण हो। हम लोग कहते थे कि हमारा आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसके लिए उनके राज्य को कहते थे शिवशाही। जब बाला साहब ठाकरे थे हमारे नेता, तो वो ये कहते थे कि महाराष्ट्र में शिवशाही लानी है। तो मुझे लगता है ये शिवशाही जो है, ये जातीयवाद मुक्त है। शिवशाही, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य ऐसा था कि जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, महिलाओं के साथ सम्मान किया, और स्त्री पुरुष समानता का व्यवहार रखा। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का बेस, महाराष्ट्र का आत्मा इन सब महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। एक टेम्पररी फेज़ है ये निकल जाएगी, और फिर से हम सही दिशा में ही निश्चित रूप से जाएंगे। व्हाट अबाउट जरांगे पाटिल? अब वो अपनी बात कहते हैं, वो किसके साथ है? ये तो वही बता पाएंगे कि वो किसके साथ है। आप लोगों से नाराज हैं क्या?
पर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा देवेंद्र के खिलाफ बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये उसके साथ अन्याय करते हैं। मैं तो जातीयवाद की राजनीति करता नहीं, और मैंने नागपुर में जब था तो कहा था कि नागपुर शहर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ और पूरी जनता मेरा परिवार है। मैं जात पंथ धर्म के आधार पर न किसी को डिस्क्रिमिनेट करूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही बात पे काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक फेज़ है ये इस चुनाव के बाद निकल जाएगी। सर, अभी कुछ दिन पहले थोड़ा एक कुछ बयान आया, उसके बाद एक रिएक्शन हुआ, तो थोड़ा केओस हुआ कि महायुति की अगर सरकार बनती है 23 तारीख को, अगर आपको मैंडेट आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? तो उस पर क्लैरिटी है या अभी भी उसके इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार किया जाए? लोकतंत्र में नए एमएलए चुनकर आने के बाद अपने नेता का चयन करते हैं, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में इसका फैसला पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व चर्चा करके करेगा। सो उस पर भी कोई ये तय नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, तीनों के नेतृत्व में लड़ाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि तीनों पार्टी मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उचित समय पर पार्टी के नेता इसका फैसला करेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, आपका असेसमेंट क्या है 23 तारीख को क्या होगा? मेरा तो असेसमेंट, अभी तो मैं, क्योंकि आपने काफी घूमा है, हाँ, अभी आप बहुत सारे क्षेत्र में जाकर आपने पब्लिक मीटिंग्स की है। अभी तक मेरी कम से कम 22-23 मीटिंग हुई है, और 50 से 40-45 मीटिंग करूँगा। तो मैं पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादातर अब मैं विदर्भ में घुमा हूँ, गोंदिया जिला में, नागपुर ज़िले में, फिर वर्धा जिला मैंने पूरा किया, नागपुर शहर में भी काफ़ी सभाएं पूरी की। अभी मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा की तुलना में अलग अच्छा एटमॉस्फेयर है, और निश्चित रूप से हमारी अलायंस को लोग विकल्प के रूप में चुनेंगे, और भारत सरकार ने किया हुआ काम ऑलरेडी उसका भी परिणाम है, और लाडली बहन योजना जो राज्य सरकार ने शुरू की उसका भी परिणाम है। ओवरऑल ये चुनाव में हमें अच्छी जीत हासिल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV। So Nitin Gadkari there speaking exclusively to NDTV on the Maharashtra political battle. But moving now to the other poll-bound state, well, in Jharkhand, the Prime Minister led the BJP's big tribal outreach with a mega 3-kilometer-long roadshow in the capital, Ranchi. This is historic, as Himanta Biswa Sarma, the in charge for Jharkhand, put it. This, of course, also as the Prime Minister launched a scathing attack on the Congress, saying that it's anti-tribal and cannot stand tribals in powerful positions. द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। Well, this of course is the Congress says that, well, the BJP is only using tribals as a vote bank. But moving now to the latest on the Baba Siddique murder probe. Well, the probe is certainly picking up pace as a key shooter, Shiva Kumar, who in fact had fled Maharashtra, has now been arrested from Uttar Pradesh. Remember, this of course also has arrested accused, has made several startling revelations as well, in a sense proving the Mumbai police's theory that there is a definitive connection to the Bishnoi gang as far as the shootout was concerned. Let me go across to my colleague Anuj Raite, joining us live from Mumbai. Anuj, so what more details do you have about what the shooter has, the arrested shooter has told the police?
In a major breakthrough for the Mumbai police, the primary accused in the Baba Siddique shooting case, Shivkumar Gautam, has finally been caught in one of the districts, Bharuch district in Uttar Pradesh, along with 4 other associates. This operation was conducted by Mumbai police alongside a special team of Uttar Pradesh police. Sources suggest that he was intending to flee the country and leave for Nepal, and he was caught before he could initiate that travel. Now, the 4 other people who've been arrested have been arrested for helping him stay absconding. If you remember, Shivkumar Gautam has been absconding since the 12th of October, the moment this incident took place, and it's been close to a month since when the Mumbai police has been looking for him. You know, there's an extensive search operation that was being put in place across the country, mostly across the Hindi belt states from where it was expected that this man had come from. Now, firstly, he's been arrested. Secondly, we've also known that he's revealed some important things in the primary round of interrogation. He suggested that he and the other associate who has already been arrested by Mumbai police, that is Dharmaraj Kashyap, are from the same village. He's also told that he met Shubham Lonkar, who later went on to take the responsibility for this attack via a Facebook post. They both met in Pune, where this individual was working as a scrap dealer. Now, this information is going to be very crucial, as he also went on to state that Shubham Lonkar was the person who got these boys connected with Lawrence Bishnoi over Snapchat. Now, all of these details will be looked into with much detail and with much attention by the Mumbai police, as it just goes on to solidify the involvement of the Bishnoi gang in this particular matter. And now some tragic news from Jammu and Kashmir. Well, one soldier has died in the line of action in the Kishtwar anti-terror operation. Remember, it was a long-drawn gun battle in Kishtwar. Many terrorists were cornered as well, but extremely tragic how this young army Jawan was killed in the line of duty in Jammu and Kashmir. And moving now to the crucial bypolls in Punjab. Well, my colleague Gurpreet caught up with the former Finance Minister of Punjab, Manpreet Badal, who says Punjab has always been a priority for the Prime Minister and the Home Minister. Take a look. Well, sir, in Punjab, we have seen a lot of sentiment against the BJP party, and you had met various times the Prime Minister, Home Minister also. So what are your experience? Well, you'll be surprised this time. But, I have traveled the length and breadth of India. People all over India, somehow the love given to the people of Punjab, because Punjab has played a very unique role in the history of the Indian subcontinent, a role which is completely disproportionate to our size and population. Punjab has sacrificed its finest sons for the honor, and the defense of this this great land. So, and so there is an anguish within the BJP, at least at the Prime Minister and the Home Minister level, that the Congress was responsible for the destruction of the Golden Temple, and people, large-hearted people from Punjab, they actually forgave the Congress party. But so there is no reason why BJP and Mr. Modi should not be voted in Punjab. So obviously there are some misunderstandings which people like me living in Punjab will have to clear. We are the bridge between the central leadership and the Prime Minister, when I went to meet him, he actually bent forward and he said, we would like Punjab to be sitting on, this is where we want, Punjab should be actually the shining star of India. And he said, when they replaced the tricolor flag with the Nishan Sahib, Prime Minister very specifically said, I don't want a single bullet to be fired. There's no difference between the Nishan Sahib of the Sikhs and the tricolor. The Sikhs have defended the tricolor and the BJP has defended the Nishan Sahib. And this is, I think, the crux of BJP policy, that Hindu-Sikh unity in India and in Punjab is paramount, and we will go to any length to ensure that, the enemies of the state should not disturb this peace.
You had also met a home minister also, and you were very curious to explain about the functioning of the home minister. You were talking about. This was almost a year back. I sought an appointment with Honorable HM, and he replied on the phone that come and see me at 2:30. So I thought it was 2:30 p.m. And then he said, then I rang up his office. He said, no, this is actually 2:30 a.m. In the middle of the night. So when I actually went to meet the home minister, and there was fog and all sorts of weather issues in the middle of winter. So I asked him, why would you, want to have visitors at 2:30? And, he said, Manpreet, we're running the third largest military in the world and the fifth largest economy. Unless we work very late into the night, we're not going to succeed. I was quite impressed with this kind of work ethic. And moving now to the big international headline, well, Ukraine's big drone attack on Moscow, the biggest drone attack since the beginning of the war, extremely concerning. This is, tensions have flared up yet again in a war that the world seems to have lost interest in. But remember, this is a retaliatory strike after Russia struck Ukraine just yesterday. Remember, that was also a huge drone attack. 145 drones were fired towards Ukraine. Earlier, we spoke to Mohammad Ghazali for more. Escalation is from both sides, not just Ukraine, but from Russia as well. Though we are reporting that this is the first time that most of the drones have been attacked from Ukraine for the first time, but even Russia has launched attacks on Ukraine. And right now, what we are picking up is that Moscow has also closed down its airport due to fearing more attacks from the Ukrainian side. And all eyes will be on the Trump administration. He has still to take oath to the office. Biden is still in the office right now, like he is still the president officially. So we'll have to see that how Mr. Trump will de-escalate the situation for this ongoing war between Russia and Ukraine for last more than 2 years. And he has made it his priority to end conflict in both Russia, Ukraine, as well as in the Middle East. But so far, the attacks have intensified in both the cases. Here, we have seen that Ukraine launching maximum drone attack in a day. 34 drones has been told towards the direction of Moscow. Russia says that it thwarted most of the attempts, but it looks like that the U.S. administration under Trump will have to take some big and major decisions in order to contain this war. Well, that's all the time that we have on the show, but news continues on the top of the hour. Hello, Moto. Motorola Edge 50 Pro, world's first AI-powered pro-grade camera. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. It was the grand launch of NDTV World by Prime Minister Narendra Modi. NDTV World, as he laid out his vision for the India century at the NDTV World Summit. ऐसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए, in the presence of those who are shaping our future. मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। NDTV World, your new home for global news is here. It's a web of frauds, calls, luring emails, threatening messages. Cyber frauds have cast their net wide and everyone is at risk. We track the victims, their horror stories as they get conned online, extorted and robbed of their hard-earned money. How to identify a cyber fraud and how to stay cyber safe. What are your options? Fraud.con, only on NDTV 24/7.
NDTV proudly presents NDTV World Summit 2024, the India Century. I now request the Honorable Prime Minister to launch NDTV World and address the summit. Prime Minister Narendra Modi's inaugural session at the NDTV Summit outlined his vision for the India Century, driven by aspirational India. हमारा प्रयास होगा भारत की सेंचुरी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत की सेंचुरी बने. The summit brought together prominent global leaders, highlighting India's pivotal role on the world stage. Not just Indians trusting India's leadership, but the global South especially trusting India's leadership. Permanent seat on the UN Security Council is something that should be India's right. Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. AI is going to be one of the most important, drivers. It's a very exciting time for India, Indian cinema as well at a global level. NDTV World Summit was more than just a conversation. It was a confluence. Sources tell NDTV Pakistan may pull out of Champions Trophy. Pakistan Cricket Board seeks advice from the Pakistan government. This as the ICC told the PCB officially that India will not travel for the Champions Trophy. Tragic news from Jammu and Kashmir. An army soldier killed in the line of duty. A young Jawan killed in action in Jammu and Kashmir's Kishtwar. 1 soldier dead, 3 soldiers injured in the Jammu and Kashmir anti-terror operation. Prime Minister Modi's big 3-kilometer-long roadshow in Ranchi. The Prime Minister leads the BJP's mega Jharkhand tribal outreach. He hits out at the Congress, says the Congress cannot stand tribals in powerful positions. The Congress hits back, says tribals are merely a vote bank for Modi's BJP. Maharashtra Congress cracks the whip on rebels. 16 rebel candidates suspended for 6 years. The race to woo women voters in Maharashtra. The Maha poll doles for women farmers and the youth. This as the MVA vows a caste census, but the BJP counters it with a skill census. Everything is fair in love and politics, says Union Minister Nitin Gadkari in an exclusive interview to NDTV. This as he takes on his friend Sharad Pawar. Gadkari like never before on NDTV. Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Vedant Agarwal. Our lead story. Well, after India's snub, now the Pakistan Cricket Board is mulling pulling out from the Champions Trophy. So the big India-Pakistan face-off off the field. This is the Pakistan Cricket Control Board is likely to seek advice from the Pakistan government as well. This after the ICC officially informed the